So, once again, students, I welcome you all in your online class of English. So, students, in the last week, in our last class, we had discussed about present tense, and this is the last slide which you had seen over there. Rules summary. Simple present tense, subject, verbs first form plus s and es. Present continuous, subject plus is mr plus verbs first form plus ing. Present perfect, in which we use has have plus verbs third form. And present perfect continuous, has have plus been plus verbs first form plus ing. So after present tense, let's read about next past tenses. So today we are going to learn about past tenses. Whatever happened in the past means जो समय बीत चुका है, जो टाइम गुजर चुका है, जो काम हो चुका है. For that we use past tense. So in this we are going to learn about 4 different types: past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous. So what is past tense? This tense tells about the actions of past. Past मतलब बीता हुआ समय. बीते हुए समय में जो भी कुछ हो चुका है वो हम इसमें पढ़ेंगे. So now first is past indefinite tense, जिसे हम simple past tense भी कहते हैं. In past indefinite tense we use the second form of verb with all the pronouns and nouns. किसी भी प्रोनाउन के साथ, नाउन के साथ we only use second form of verb. 3 forms of the verb already I had given you. I had given you 53 forms of the verb. So उसी तरह से आपको उन forms of the verb को बार बार रिवाइज करना है, तभी आप tenses easily कर पाएंगे. So first example is he ate food. Ate is the past tense of eat. Eat, ate, eaten. Next, we took the bus. Took is the past form of take. Take, took, taken. So in this form, you have to revise one more time all the 3 forms of the verb. And in all these sentences, when you just go through it, you come to know that we used second form of the verb. Now, some elaborated explanation. Like, this is, I already told you, we have to use second form of the verb with subject. He met his friend last year. तो अब कब की बात कर रहे हैं? Last year की, sometime in the past. So we use met. Met is the past form of meet. Next, we are going to learn about negative sentence. Subject plus did not. So what is did? Did is the past form of do. Do, did, done. जैसे हम सिंपल प्रेजेंट में डू डज का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? डिड. एंड बेटा रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू यूज़ डिड इन अ सेंटेंस, अगर आप डिड यूज़ करते हैं, सो वी यू हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. शी डिड नॉट वर्कड यस्टरडे. ओके, सम मिस्टेक इज़ देयर. कुछ मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है? यू हैव टू आइडेंटिफाई. अभी मैंने आपको बताया कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. सो कैन यू यस, यू हैड गेस्ड इट करेक्ट. शी डिड नॉट वर्क येस्टरडे. डिड शी वर्क येस्टरडे? So I intentionally put them wrong so that I just come to know whether you are just looking at it or you are thinking also. आप साथ साथ सोच भी रहे हो या सिर्फ पढ़ रहे हो आप? तो ये 2 sentences you have to use work in these sentences. Yes, next. Past continuous tense. In this we are going to use subject plus was were plus verbs first form plus ing. तो कॉन्टिन्यूस में हमारा हमेशा कौन सी वर्ब फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. प्रेजेंट में वी यूज इज एम आर एंड इन पास्ट वी यूज was were. Same in negative,
was, were plus not, and in interrogative these helping verbs, these auxiliary verbs will come in the first of the sentence, in the beginning of the sentence, sentence के पहले आ जाएंगे. पहले जैसे she was cooking all morning, बट जब इसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो was पहले आ जाएगा. was she cooking all morning, and at a question mark at the end. now why we use it, अब हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसे. नंबर 1, टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शंस, मीन्स जब दो चीज़ें एक साथ होती हैं. सम एट अ सम टाइम इन अ पास्ट while I was washing the dishes I heard a loud noise. So you can see that two parallel actions are going on, washing the dishes and a loud noise, and hearing a loud noise. To describe what someone was doing at a particular point in time, देखो प्रेजेंट में हम कब यूज़ करते हैं कि अभी क्या हो रहा है, और पास्ट में हम यूज़ करते हैं कि उस समय क्या हो रहा था. What action was continue in the past at that particular point of time. I was working in the garden all day yesterday. I was working means कल सारा दिन मैं क्या कर रही थी. I was working in the garden. So at a particular point of time means at the time of yesterday, what happened? I was working in the garden. To express interrupted action in the past means when some action was interrupted, जब कोई action interrupt किया गया. I was driving to work when I crashed my car. So I was driving to work and that action was interrupted by crashing of the car. कार crash होने से वो जो action है हमारा driving का, that was interrupted. To describe repetition and irritation, he always complaining in class. He was always complaining in class. This is an example of repetition, that always he used to complain in class. Next is third tense, past perfect tense. In this we are going to use subject plus had. In present perfect we use has, have plus verbs third form, and in past perfect tense we use had plus verbs third form. Same in negative, had not, and in your interrogative sentence this will come in the front. had पहले आ जाएगा. जैसे she had finished the test, when we change into negative she had not finished the test, and in interrogative as I told you had को हम पहले यूज़ करेंगे. had she finished the test and a question mark at the end. Now where we use it, to describe an action finished before another past action. किसी, मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या बताया, पैरेलल मीन्स टू एक्शंस आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम. बट in this past perfect tense, one action had finished before the another action. Richard had gone out when his wife arrived in the office. Wife arrived, but then till then Richard had gone out. ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा. आपको एक सेंटेंस में अगर आपको दो टेंस यूज़ करने हैं, परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, तो आप कैसे यूज़ करेंगे कि जो एक्शन पहले ख़त्म हो चुका है, उसमें आप हैड यूज़ करेंगे, बिकॉज दैट एक्शन हैड फिनिश्ड बिफोर द सेकेंड एक्शन, एंड इन सेकेंड एक्शन यू हैव टू यूज़ सिंपल पास्ट टेंस. Describe an action that happened before a specific time in the past. एक specific time से पहले काम ख़त्म हो चुका था. Kristen had never been to an opera before last night. Last night से पहले she had never been to an opera. To describe cause and effect. जब किसी चीज़ का हम इफ़ेक्ट बताते हैं, जब रिजल्ट बताते हैं, एंड इट ऑल्सो कंबाइंड विथ सिंपल पास्ट टेंस. आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक बिकॉज देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट. सो व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों लेट हुए, क्यों ट्रैफिक में अटके, क्यों ट्रैफिक में स्टक हुए, बिकॉज देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट था, एंड दैट कॉज, दैट रिजल्ट, दैट इफेक्ट, इट्स शोन विद द हेल्प ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. टू एम्फेसाइज द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट, और जब पास्ट में कोई एक्टिविटी हो गई है, टू एम्फेसाइज द रिजल्ट कि उसका क्या रिजल्ट हुआ. आई हैड बीन टू लंडन ट्वाइस बाय द टाइम आई गॉट अ जॉब इन न्यूयॉर्क.
So with it, last, past perfect continuous tense. Same as in present we use has, have, been, verbs first form plus ing. In it we use had, क्योंकि past perfect में हम क्या use करते हैं? had been, verbs first form plus ing. They had been playing tennis. Negative, they had not been playing tennis. And in interrogative, had they been playing tennis? So why we use it? Usage. Number 1, to describe a past action already started and continued up to another action or time in the past. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रहा था